ज्योति स्टेनोटाइपिंग कॉलेज में आप सभी का स्वागत है बच्चों। ये इंग्लिश लीगल डिक्टेशन है। ये सभी जितने भी सेशन कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट डिक्टेशन है। और जो है इसमें 100 की स्पीड है और ये 510 वर्ड हैं जो मैं आपको पढ़ूंगा। इसको आपको पहले इसको शॉर्ट हैंड में लिखना है। शॉर्ट हैंड में लिखने के बाद इसको पढ़िए। पढ़ने के बाद इसको आप टाइप करके अपनी एक्यूरेसी जरूर जानिए, क्योंकि जो है कोर्ट्स के अंदर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मांगी जाती है। तो ये जो है जैसे मतलब क्या कहते हैं, तो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये वेबसाइट है ज्योति स्टेनोटाइपिंग कॉलेज.com। इस वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहाँ जाकर के एक बटन होगा एडमिशन फॉर गवर्नमेंट जॉब ओनली, लाल कलर का बटन है। उस पर क्लिक कीजिए, अपना जैसे रजिस्ट्रेशन कीजिए, यूज़र नेम पासवर्ड बनाइए। मंथली या ईयरली जैसे भी आप कोर्स लेना चाहे ले सकते हैं। उसमें बेसिक है, डिक्टेशंस है, कैलाश चंद्रा की डिक्टेशंस हैं, जैसे मतलब पार्लियामेंट्री जैसे मतलब स्पीचेस कह देते हैं, वो सारी हैं। और अपना ये जैसे लीगल डिक्टेशन भी उसी में है। इससे रिलेटेड पीडीएफ जो है जैसे मतलब क्या कहते हैं आउटलाइंस की पीडीएफ, वो भी अवेलेबल है। तो जैसे मतलब क्या कहते हैं, इसको वहाँ जा करके टाइप करके आप अपनी एक्यूरेसी जान सकते हो। स्पेलिंग एरर जो होते हैं वो ठीक कर सकते हो। स्पेलिंग्स जो आपसे गलत हुई हैं वो देख सकते हो, स्पेलिंग सही क्या है। और जैसे मतलब आउटलाइन जो गलत बनाई है या बनी नहीं है, जैसे उसमें आउटलाइन भी दे रखी है, वो सॉफ्टवेयर आपको सब कुछ निकाल के देगा। आउटलाइन एरर कितनी की है, स्पेलिंग एरर कितनी की है, टाइपिंग एरर कितनी की है, रिपीटेशन कितनी बार हुआ है, एक ही गलती को बार बार कितनी बार आपने लिखा है, तो ये सब उसके अंदर होता है। तो इस वेबसाइट पर जा करके आप वो जैसे मतलब क्या करते हैं, लिखने के बाद जो है ये सारी प्रक्रियाएँ कर सकते हैं। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ इंग्लिश लीगल डिक्टेशन नंबर 6। डिक्टेशन स्टार्ट आफ्टर 5 सेकेंड। भैया एक बार जैसे ये फैन बंद कर दोगे थोड़ी देर के लिए, ऊपर सेकंड बटन होगा शायद इसका, सेकंड ऊपर से सेकंड ना, फर्स्ट है फिर उसको ऑन कर दे। हाँ बस ठीक है। Dictation start after 5 seconds. It is settled preposition of law that the date of birth entered in the service record cannot be corrected at a belated stage. Where the date of birth remains in existence for a long time, the same does not require to be disturbed on any ground whatsoever. The onus is on the employee applicant to prove about the wrong recording of his date of birth in his service record by adducing irrefutable evidence. The court has to insist for clear clinching and unimpeachable evidence in this regard, because the relief sought by an employee may entail chain reaction hampering promotional prospects of junior officers and may cause an irreparable injury to them. The Honorable Supreme Court held that while examining the issue of correction of date of birth, the court must be very slow in accepting the case of applicant if issue has been agitated at a much belated stage, and it must examine the pros and cons involved in the case even if not raised by the parties. In the said case, the tribunal had allowed application for correcting the date of birth, placing reliance on the horoscope and a certificate issued by the retired headmaster of the school showing a different date of birth. The apex court reversed the said judgment, observing that if it was allowed, the applicant would have joined the service when he was less than 18 years of age, and therefore accepting such an application would amount to sanctifying his illegal entrance in service. The court further observed that no reliance could be placed upon the said certificate and horoscope at all. In State of Punjab versus Mohinder Singh AIR 2005 SC 1868, the Supreme Court held that horoscope is a very weak piece
of material to prove age of a person. A very heavy onus lies on the person who wants to press it into service and to prove its authenticity. It requires to be proved in terms of section 32(5) of the Evidence Act by examining the person having special means of knowledge, and in that context horoscopes have been held to be inadmissible for proof of age. The Honorable Supreme Court further held that the court must be very vigilant in placing reliance on a document or a certificate of date of birth which had been brought into existence for the benefit of the pending proceedings, as the correctness and genuineness of such a certificate is not free from doubt, and the same might have been obtained for getting the relief by such an applicant. The date of birth as recorded in the service book as declared by an officer in application for recruitment has to be accepted as correct by the central government, and this can be altered only if under sub-rule 4 of the rules 1958 it is established that a bona fide clerical mistake had been committed in accepting the date of birth, and once an application has been rejected, it would be a case that there was no bona fide clerical mistake which had been committed. स्पीड में आपको बता देता हूँ। ये 115 की स्पीड रही, और क्या कहते हैं, पहले इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद इसको टाइप कर दीजिए, ठीक है। अगर आपसे जैसे ये आउटलाइंस इस स्पीड से नहीं लिखा गया है तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और जो है स्पीड जो है आपकी जो है कोर्ट के अंदर 120 जो है आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे एज ए सीन जैसे आप कर रहे हो, जैसे मतलब क्या कहते हैं, इसकी पहले आउटलाइन देख लेते हो, फिर उसके बाद आप लिखते हो, तो 120 प्लस आपकी स्पीड होनी चाहिए, जिससे आप अनसीन डिक्टेशन जो है वहाँ पर जो आपको बोली जाए 100 की स्पीड से, जिसको आप लिख पाओ। इस क्लास के अंदर इतना ही बच्चों। नमस्कार बच्चों।